Namaskar, Adab, Sat Sri Akal. A very warm welcome, everyone. Good morning, afternoon, evening, wherever you are. Hope you're doing well, staying safe, and staying healthy. And welcome to another session. We'll try to keep it short, sweet, but at the same time, कोशिश करेंगे कि आज थोड़ी सी वो बातें दोबारा से रिवाइव करें. थैंक्स टू प्रियंका दी, जो रोज़ बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही मीनिंगफुल एंड थॉट प्रोवोकिंग टैगलाइंस दे रही हैं. एंड आज की वो टैगलाइन भी एक ऐसी ही टैगलाइन है जिसमें अ, बहुत सारी बातें हुई हैं इन द लास्ट 22 प्लस मंथ्स. हमने बहुत बहुत सारे लोगों को आते देखा, जाते देखा, पॉलिटिशियंस को पॉलिटिक्स करते हुए देखा. कुछ ऐसे एडवोकेट आए, कुछ ऐसे लोग आए इस पूरी मूवमेंट में जिन्होंने इस पर्टिकुलर फाइट को बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिसाइज़ किया. एंड देन वी हैड दोज़ क्रिटिक्स, वी हैड दोज़ पीपल हु वर ऑलवेज़ स्केप्टिकल कि यहाँ पर पॉलिटिक्स लानी ही नहीं चाहिए, ये पॉलिटिक्स का कोई लेना-देना नहीं है. ऑफ कोर्स एवरीबॉडी हैव देयर ओन ओपिनियंस, देयर ओन व्यूज़. और आज वाला ये सेशन भी इट्स गोना बी अराउंड योर व्यूज़, योर थॉट्स, योर आइडियाज़ अबाउट जो हुआ, जैसे हुआ. क्या पॉलिटिक्स को अलग रखा जा सकता था? क्या पॉलिटिक्स इसमें एक इंटीग्रल पार्ट जो प्ले कर रही है, वाज़ इट इवन रिक्वायर्ड? आप लोगों ने क्या इस पूरी जो एक जर्नी जो ऑलमोस्ट 22 मंथ्स की देखी है, इसमें जो स्टेटमेंट्स कुछ सुनी, कुछ हमें याद हैं, कुछ नहीं याद, उनको हम थोड़ा-सा आज याद करेंगे, कुछ देखेंगे, कुछ ऐसे वीडियोज़, ऐसे क्लिप्स जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिसाइज़ किया गया, चाहे वो बिहार से के इलेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो मुंबई पॉलिटिक्स हो, चाहे वो मुंबई के लीडर्स हों, या ओवरऑल अगर देखा जाए सेंट्रल से लेके एवरी सिंगल स्टेट से लेके या सेंट्रल गवर्नमेंट तक, बहुत सारे लोगों के बीच में स्टेटमेंट्स आई, बहुत सारी बातें हुई. सो इवन दो वी विल नॉट बी एबल टू कवर ऑल दो स्टेटमेंट्स, बट येस हाई लेवल सम की स्टेटमेंट्स जो आई, uh, those are very very key to this particular movement. जिस तरह से प्रियंका दी आजकल वैसे भी थ्रू हर टैगलाइंस, मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, मैं फिर बोलूंगा कि शी इज गिविंग अस अ लॉट ऑफ साइंस, लॉट ऑफ सिग्नल्स, which is what we wanted. But at the same time, जिस तरह से इस मूवमेंट के अंदर ये लीडर्स आए, जिस तरह से अपनी अपनी, इफ आई कुड यूज द टर्म, अपनी अपनी रोटियां सेकी, जिस तरह से उन्होंने इस चीज को यूज किया, कुछ फायदे में रहा, कुछ चीजें फायदे मतलब हमें हमें डेफिनेटली वी गॉट अ लिटिल बेनिफिट आउट ऑफ दैट बिकॉज ऑफ सच पीपल. थोड़ी ज़्यादा विजिबिलिटी, ज़्यादा नॉइज़ हुई, जो शायद उस टाइम पे ज़रूरत भी थी. सो चाहे वो मिस्टर स्वामी हो, चाहे वो फिर ईशकरण भंडारी जैसे एडवोकेट्स की बात हो, या और भी ऐसे बहुत आए. देन द मीडिया, दैट ऑल्सो प्लेड एन इंटेग्रल पार्ट, एन इंटेग्रल काइंड ऑफ अ की रोल इन स्प्रेडिंग द वर्ड आउट. तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, बहुत सारी बातें थी, उनके बारे में ज़रूर बात करेंगे. और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग जो जुड़ चुके हैं. नमस्कार सिमी रमन जी, हेलो 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 रमन जी. हाय जूडी, हाउ आर यू? हाय शिवांश, गुड इवनिंग. केडी, ग्लोरिया, हेलो हेलो. शमीरा जी, हेमा जी, प्रीता जी, आकाशवीर जी, नमस्कार. हेलो सोनल, हेलो हेलो हेलो. And Patty, hello, welcome. Shalit and Nipunji, Sashrikal, welcome, welcome. Varun, political parties involved, so indirectly it's become a political thing. Exactly, Gloria. That is the point, right? That the people who say this should not have become political. I don't see any other way out. I don't see politics though iska integral part hai because if this politician or some of the politicians या people in power are involved in this, तो politics तो होगी. ये तो वो तो हो ही नहीं सकता. So obviously I'm gonna start with of course some of those videos as well, and then we can talk, and I'll invite you all as well. So hello Rinky, hello Pihu, hello RS, and hello Bindu ji, hello. एक बार मैं सबको hello कर लूं.
Hello, Ganga Lamaji. Hello, Preeta. Hey, Shri. Hope you're doing well. Insaf SSR. Hope you're doing well and you are safe. All right. So, 100 kilo sona. Okay. So let me just start with one of those initial things that really stirred the pot. यहाँ से मैं कहूँगा कि एकदम से ही सिनारियो ही बदल गया, सिचुएशन ही बदल गई। वो एक मीम आता था जैसे कि किस तरह से पूरे जज्बात ही बदल दिए, किस तरह से पूरी इस मूवमेंट की एक एक काया पलट जो हुई, वो था शायद ये एक स्टेटमेंट जहां से आई थिंक everything started. So let's start with this. A free-for-all slugfest between Maharashtra and Bihar. And the latest Neta to walk into the ring is BJP leader Narayan Rane, who's made his own set of sensational claims about the Sushant Singh Rajput death case. Narayan Rane has raised questions once again about Riya Chakravarti. I agree, Shri. And asks why she's gone missing. Narayan Rane claims that Sushant's ex-manager Disha Salian, who died 6 days before Sushant, was raped and killed and that she did not die by suicide. These are words of Narayan Rane, a BJP leader. He also asks for actors Suraj Pancholi and Dino Moria to be questioned. Narayan Rane alleges many ministers would visit Dino Moria's house, lived a short distance away from Sushant's home. I want to very emphatically clarify that these are allegations and statements being made by BJP leader Narayan Rane and not by India Today. We are only reporting what the political leader has said in this developing story. Listen in. रिया चक्रवर्ती ही सुशांतची मैत्रीण, त्याच्याबरोबर राहायची. 9 तारीखला ती तिथून सोडून गेली. फोनही बंद केला, बँक अकाउंटही बंद केले. असे एक प्रमुख या सुशांतच्या केसमधली व्यक्ती आज 3-4 दिवस गायब झाली आहे. पोलिसांना माहित नाही. टावर वरून, मोबाईल टावर वरून तिचं लोकेशन आणि हे सगळे जे आले होते, सुशांतचा मागील काही दिवस 20 दिवस ज्या धमक्या येत होत्या, कोणाच्या होते, कोणाचे फोन होते, हे काय मुंबई पोलिसांना माहित नाही, अज्ञान असेल असं मला नाही वाटत. हिची आत्महत्या झाली. 8 तारीखला तिने आत्महत्या केली. तिच्या राहत्या बिल्डिंग वरून उडी मारली वगैरे बातम्या आल्या. So the good thing is case में you can read what he's saying कि किस तरह से 8 तारीख को दिशा सालियान के बारे में, and he is very clearly saying, I have been informed that her postmortem revealed that she did not commit suicide and was killed. She was raped and then killed. कारण ती सुशांत बरोबर राहत होती. तिच्या पार्टीला जे लोक गेले होते 8 तारीखला, त्यांचा किती जणांच्याशी संबंध आहे. मला जी माहिती मिळाली आहे की तिचं जे पोस्टमॉर्टम झालं, त्या पोस्टमॉर्टम मध्ये पाहिलं तर तिने आत्महत्या केलेली नाहीये, तिची पण हत्या आहे. So what he's saying is it was not a suicide, but this was a murder. ये थे बीजेपी लीडर नारायण राणे, जो अगस्त से ही शुरू हो गए थे ये बातें करना. And he has taken direct names. बलात्कार करून तिला मारलेला आहे. तिच्या वजायनल भागावर जखमा आहे. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. So जैसे आपने सुना, इन्होंने शुरुआत से ही right from August itself, August of 2020, बिल्कुल सीधा कह दिया कि
दिशा के साथ जो हुआ, सुशांत के साथ जो हुआ, दैट इज नॉट अ सुसाइड, इट वाज अ मर्डर। दिशा के बारे में तो इन्होंने इतनी सारी अभी एलिगेशंस या इतनी सारी स्टेटमेंट्स बोली, और exactly, but where are they now? That Rise Disasters interview, he should have counted it. That is what, Judy, the point is कि इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स, इतने एलिगेशंस लगाने के बाद, now when this guy, the same guy जिसके बारे में कहा गया था, इन्होंने स्टेटमेंट बोली थी कि रोहन रॉय should be interrogated. Where is he? Where is he hiding? Now that guy has come out, he should have been, both, the entire Rane family actually should have filed uh, a case, or should have come out and did a kind of a press conference, or expose this guy for lying. But abhi tak, I'm sure a lot of us are waiting. और सिर्फ यही क्यों, इसी की क्यों बात करें, और बहुत सारे, ये पहली बार देखी हूँ। oh my god, this is something, this is not yeah, I'm glad कि अगर किसी ने ये पहले नहीं देखा था और अब देख रहे हैं, then they are getting shocked, but this is how it all started. इसी तरह से ये शुरू हुई थी बात। उसके बाद बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स आए, बहुत सारी ऐसी बातें हुई। यू नो लेट मी डू दिस। इस इंटरव्यू और इस स्टेटमेंट के बाद एक और जो बहुत बड़ा कहें, या एक स्टेटमेंट आई, अब उसको सुनते हैं। All right, there's enough that has gone down on the Sushant Singh Rajput death probe, to a limit where certain political outfits even dragged Aditya Thackeray's name in all of this. The latest coming in is breaking news on that. Maharashtra Minister, Shiv Sena leader Aditya Thackeray has broken silence over Sushant Singh Rajput death probe. Aditya Thackeray, in a statement that has just been released by him, says, "This is street level politics, but I will keep my calm." Aditya Thackeray says dirty politics being played over Sushant's death. He adds, "I will not do anything that will malign my image or the image of Maharashtra, Sena and the Thackeray family." Aditya says those who don't believe in protocol are making false allegations to distract the probe. This is a statement given out by Aditya Thackeray. To put this in perspective on what coerced Aditya Thackeray to come out and make a statement such as this, to say that the level of politics with what he deems is dirty, with his name also now being dragged into the double death probe case. Of course, two suicides which were earlier labeled as suicides of Disha and Sushant. His name has now been dragged in, and Aditya Thackeray has come out with a clarification. I want to bring in our Mumbai Bureau Chief, Sahil Joshi, joining me live for more. Sahil, put this in perspective. Why was Aditya Thackeray today forced into making a public statement? Preeti, there have been a lot of WhatsApp messages and some YouTube blogs which were claiming certain sensational claims with respect to Sushant Singh Rajput's suicide case, allegedly suicide case, and Disha Salian's allegedly suicide case. And they were trying to link it with each other, as well as they were hinting that some young minister, including some BJP MLAs and the senior leaders, also claimed that some young minister was also part of some kind of a party, despite a Mumbai Police Commissioner clarifying that there was no party at Sushant's house, or for that matter at Disha Salian's house, where some Bollywood personality or a leader was attending it. And neither there is any connection between two cases, but these kind of things kept on today, including Narayan Rane, the senior leader of Bharatiya Janata Party and former chief minister, who is also a member of parliament, also made certain sensational claims. And after that, it looked like that Aditya Thackeray had to come up with some clarification of the statement. The statement clearly says that he has nothing to do with any of the cases. He also said that people have been spreading rumors because I have relations with some of the people who are working with Bollywood, but Bollywood being an industry, he needs to keep those relationships, and there is nothing wrong in that. But he emphasizes that he's a grandson of Shiv Sena Chief Balasaheb Thackeray, and he will do no wrong which will defame his family's name, his government's name, as well as the name of the state.
he has alleged that the dirty politics is being played, and Right. right So, now, before I he's let seeking you go, this patience. dirty So politics basically, that he talks about clearly stems from what Narayan Rane said today. I want to play that exactly. reaction out, but Yes. I'm going to ask you a question before I let you go. Is that purely in capacity with what Narayan Rane says, or is this the bona fide version of the Bharatiya Janata Party unit in Maharashtra? Because he has leveled very, very grave charges. See, till now, various leaders have spoken about this particular case, including that of Devendra Fadnavis, who is leader of opposition, but none of them made any specific claims with respect to that. They made some claims about hinting that there must be something wrong with Disha Salian case, or for that matter, Sushant Singh Rajput case. But today, Narayan Rane actually said all those things which have been making rounds on the WhatsApp and various social media messages, claiming that Disha Salian was raped, which has been completely denied by Mumbai police investigation and the postmortem report. He also claimed about So, yeah, kind let of me a just party finish happening this. at Sushant Singh Rajput's house, which has also been denied by Mumbai police. Also said that there is a CCTV footage available with them, which was claimed that there is no CCTV. So various other aspects which has been taking rounds in social media. Narayan Rane exactly said those things in those many words, but none of the BJP leaders in the past who have said that there needs to be a CBI investigation ever made such kind of sensational claims. Today, for the Okay. Couple of things, in so supposedly the allegations and the claims. uh, इतनी सारी बातें बोली गई, इतनी सारी चीजें इस चाहे वो सुशांत से रिलेटेड हो, चाहे दिशा से रिलेटेड हो, बट द फैक्ट रिमेन्स अ फैक्ट दैट देयर वर सर्टेन थिंग्स, a lot of things that were botched up by the same Mumbai police. मुंबई पुलिस ने क्या क्या नहीं गवाया, क्या क्या नहीं किया, वो हमने सब वीडियोस में देखा है, सब क्लेम्स देखे हैं वो वीडियोस में. द वे देव कैरिड आउट दोज supposed evidences, किस तरह से वो वहां से लेके गए रूम से, किस तरह से पिकनिक बना के रखा हुआ था पूरा वो जो मर्डर सीन को, कोई लॉक नहीं, कोई रूम को सील नहीं किया गया, एंड ऑल दैट वी हैव सीन. सो व्हाट एल्स कैन वी एक्सपेक्ट नाउ? द बिगर थिंग इज the confidence that both चाहे वो नारायण राणे हो, चाहे नीलेश राणे हो, जिस कॉन्फिडेंस से ये लोग बात कर रहे थे, और not now, since August of 2020 they have been very much like sticking to their points. uh, they have not moved a bit. अब जब रोहन राय आके इतना कुछ अगेन अगेंस्ट बोल रहा है, why are this Iran is not doing anything about it is my personal question. As much as I would love, जैसे अभी एक सोनल ने भी एक comment किया था कि let me see, yeah, we are all rooting for Ranes to win, but they should also be rooting for themselves. That's the problem. कि हम लोग तो किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं, हमने तो पॉलिटिशियंस क्या, लीडर्स क्या, हमने तो पार्टीज क्या, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स क्या, सबके ऊपर भरोसा किया. हम चाहते हैं कि ऑब्वियसली वी गिव देम द कॉन्फिडेंस एंड वी गिव देम द सपोर्ट दैट दे रियली नीड एंड डिजर्व. But why is something not coming out? Now, KD is saying, anyone who followed Maharashtra politics, name one good thing you remember of Rane's for. So, again, since I'm not from Maharashtra, और बल्कि यहाँ पर कोई अगर महाराष्ट्र से है, they should be able to speak on this. कि अगर कुछ हिस्ट्री में से कोई चीज ऐसी आई है, and forget the good thing about anybody who's done anything good. I would say, look at their past, look at what they have done, look at the, if there are any issues, cases, and whatnot. अगर ऐसा कुछ है तो हमें किसी पे भी फेथ कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए. सो चाहे वो राणे हो, चाहे वो कोई भी हो. आयुष जैसे कह रहे हैं, राणे साहब जनता को बेवकूफ ना बनाएं, मामले को रफा दफा कीजिए जल्दी से जल्दी आप. एग्जैक्टली, this is the request of all the people, not only SSR warriors. I'm sure even the family, अगर है तो उस चीज को बाहर लाया जाए, उस चीज को सबके सामने रखा जाए, या एटलीस्ट एजेंसीज के बाद. वन थिंग दैट आई रियली डिडंट लाइक, द काइंड ऑफ स्टेटमेंट के जिस दिन हमारे पास सीबीआई आएगी वो हमें रिक्वेस्ट करेगी तो हम देंगे.
I don't know, again from a legal perspective, I personally feel ऐसे केस के ऊपर, ऐसी स्टेटमेंट्स के ऊपर भी किसी को अरेस्ट कर लेना चाहिए, या केस कर देना चाहिए कि भाई अगर आपके पास किसी मर्डर से रिलेटेड एविडेंसेस हैं एंड यू आर नॉट गोइंग आउट एंड टॉकिंग अबाउट इट एंड गिविंग इट टू द एजेंसीज वर्सेस you're doing all these press conferences and talking about it publicly. You are instigating the warriors, and you're instigating a lot of people. There should be a legal action taken on such things. So not that I am not supportive of the Ranis, but at the same time, this is not how a murder can be handled. Or फैमिलीज, दोनों की फैमिलीज, चाहे वो दिशा की फैमिली हो, चाहे वो सुशांत की फैमिली हो, जस्ट अंडरस्टैंड द प्लाइट, जस्ट अंडरस्टैंड द पेन दे मस्ट हैव बीन गोइंग थ्रू इनिशियली, द पेन दे मस्ट बी गोइंग थ्रू राइट नाउ. सो उस पेन को ही अगर समझा जाए तो अगेन कीपिंग द पॉलिटिक्स असाइड, द सर्टेन स्टेप्स शुड हैव बीन टेकन बाय नाउ. बट क्योंकि वो स्टेप्स नहीं लिए जा रहे, कुछ किया नहीं जा रहा, दैट इज डेफिनेटली मेकिंग ऑल ऑफ अस बिलीव दैट देयर इज नथिंग but politics. There is nothing, no evidence, just वो कहते हैं ना, hint of how do I take a pot shot on XYZ political party or XYZ political person, and that's pretty much what it looks like right now. जब तक इसके ऊपर we don't get एक तरह से एक concrete evidences are not out, that's what a common man will feel. A robber will never say he robbed. Will a murderer say he murdered? That young politician can say nothing, can say anything, because exactly, तो जिसके पास एविडेंसेस हैं कि रहते प्रोब नामुमकिन है. तो हिमांशु भाई, बात तो यही है ना. इसके ऊपर ये स्टेटमेंट मैंने बहुत सुनी है. Isn't it a fact? And again, I'll add the StreamYard abhi thodi der mein. I'll love to hear your thoughts and views as well. But isn't it a fact? Say for example, I am from the opposite political party, and I have evidences against that political party, the political leader, या उनके around जो भी लोग हैं, so why would I not bring that out, use that officially to bring down the government? What is stopping me from doing that? I don't understand. Maybe मेरी शायद political knowledge या मेरी experience, मेरा focus on that political angle is uh, uh, I think I'm the most ignorant in that frame. But अगर मेरे पास कुछ है और मुझे मौका मिल गया किसी को to bring them down, to show my like more power or my victory around certain things, why would I not use it? ये इस तरह की ये गेम खेलना, वो मुझे नहीं समझ आती. So that's all I'm trying to understand. What should the SNN do to rattle the Ranis to speak? Judy, we've been doing a lot, right? We've all been tagging him, pinging him. DM में भी बहुत लोग करते होंगे. I'm sure wherever they are going, they are meeting people, and those people might be talking. End of the day, it's up to them. It's not up to a Varun or a Judy or a Sonal or anybody. It's all about who can do something is just the Ranis and nobody else. All I'll say is ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, वोट चाहिए तो जस्टिस दिला दीजिए. I know, voting से याद आया, we all would have seen how all these political parties, political people, leaders, and whatnot they did. Let me just play something. Okay, let me show you this one first. The broadcast, Bihar Minister Maheshwar Hazari says Sushant was murdered. A big charge there being leveled by a minister in Bihar says everyone knows that Sushant was murdered and that the Maharashtra government should cooperate in the probe and allow the CBI probe to take place. अब कोई जान गया है कि सुशांत सिंह के आत्महत्या नहीं हत्या है, और इसके पीछे किन किन लोगों की हाथ है, सब के सब लोग जानते हैं, लेकिन उसको जनता के बीच में नहीं लाने का नाम नहीं लाने का काम कर रहे हैं. तो मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र सरकार से मुझे आग्रह है कि जनता ने जो जनादेश आपको दिया
न्याय देने के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो अधिकार दिया है हर व्यक्ति को, तो जिस तरह से सुशांत जी इतने लोकप्रिय थे, जो उनका प्रतिभा थी, पूरे करोड़ों फॉलोअर्स चाहता है कि जो भी व्यक्ति हो उसका नाम उजागर करने का काम कीजिए, उसको दंडित करने का काम कीजिए। हम लोग कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोग महाराष्ट्र का सभी भी आग्रह करते हैं। And that's all we have for you in this broadcast. Stay with us for more news and updates on the other side. So if you hear, जो सबसे हैरानी की बात लगती है, not one, not two, but many ministers, people in power, in different capacities, they have been saying the same thing कि यहाँ पर पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं, यहाँ पर मुंबई के बहुत सीनियर लीडर्स इन्वॉल्व हैं, कुछ के केसेस में तो दे हैव आल्सो टेकन नेम्स। और अगर हम पॉलिटिक्स की और बात करें, लेट मी जस्ट शो यू वन मोर थिंग। ओके, हियर वी गो। ये भी नहीं कहूंगा कि छोटे लेवल पे, even at a level of a chief minister, things have happened. One second, looks like it got frozen. जांच की सिफारिश बिहार सरकार ने सुशांत सिंह मामले को कर दी है, कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर हम लोग का मांग शुरू से रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो सुसाइड हुआ है ये मर्डर है, लेकिन हम लोग सीबीआई का मांग कर रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, बिहार सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि सीबीआई मांग का जो हम लोग किए थे वो सिफारिश कर दिया गया। जिस तरह मुंबई पुलिस व्यवहार कर रहा था बिहार पुलिस के साथ, हाथ में ठप्पा लगाया, उसको हाउस अरेस्ट कर लिया, क्या मतलब था भाई? प्लेन से तो बहुत लोग गए, किसको आप क्वारंटाइन किया? एक व्यक्ति, यहाँ का आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को। इसलिए जो काम हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। अब जो भी अपराधी होगा उसके गिरफ्तार तक सीबीआई पहुंचेगी। कोई भी अपराधी पाताल में भी रहेगा तो खोज लिया जाएगा। हमारा बिहार पुलिस भी सक्षम था, बिहार पुलिस भी सक्षम था उस अपराधी को खोज लेता, लेकिन आज सीबीआई का सिफारिश कर दिया जो अब देश का मांग था। एक होनहार कलाकार, बिहार का लाल, किस तरह सुसाइड का मर्डर करके सुसाइड का मामला बना दिया। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। करोड़ों फैंस और परिवार के बातों को उन्हें सुना, तमाम नेताओं का बात उन्होंने सुना, जो हमारे माननीय नेता आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी, माननीय चिराग पासवान जी, माननीय आदरणीय भूपेंद्र जी, नित्यानंद जी, सबों ने माननीय मुख्यमंत्री से बात किया। माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे भी रात को लंबी बात उन्होंने किया। विधानसभा में मामला आया, दोनों सदन में हमने उठाया, मेरी पत्नी ने विधान परिषद में मामला उठाया। तो तमाम चीजों को देखते हुए और मुंबई पुलिस किस तरह असहयोग कर रही बिहार पुलिस को, तमाम एंगल को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मामले को सीबीआई को भेजने का काम किया। हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं, करोड़ों फैंस की तरफ से हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने सीबीआई को सौंपने का काम किया। और हमें पूरा तसल्ली है कि ये मामले में पूरी तरह निष्पक्ष जांच हो जाएगी और करोड़ों फैंस को तसल्ली मिलेगा और दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा। एक उभरते हुए कलाकार को न्याय मिलेगा और दूसरे के किसी कलाकार के साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी, ये हमें उम्मीद है। मुख्यमंत्री वहां मान गए हैं बिहार के, उन्होंने रिकमेंड किया है इस मामले की सीबीआई जांच। देखिए, दे रहा है, दुरुस्त है। आज सुबह मेरी माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी से मेरी एक लंबी बातचीत हुई, लगभग 10 मिनट तक हम लोग की बातचीत हुई। उस वक्त भी कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात के संकेत जरूर दिए थे कि वो सीबीआई जांच की सिफारिश संभवतः आज कर सकेंगे।
उनसे मैंने आग्रह किया था, कल ही मैंने उनको पत्र के माध्यम से ही मैंने उनको लिखित मैंने उनसे आग्रह किया था कि संभवतः शायद समय की कमी हो जाए इसके बाद, क्योंकि जिस तरीके से कल उच्चतम न्यायालय में भी इस केस को लेकर सुनवाई होनी है, आज की तारीख में बिहार पुलिस के पास ये केस है, बिहार पुलिस इसकी जांच कर रही है, एफआईआर बिहार में दर्ज है, तो पूरी तरीके से ये आधार बनता है कि आप इसकी सिफारिश आप सीबीआई को कर सकते हैं। तो आज जब माननीय मुख्यमंत्री ने की, तो अब उम्मीद है कि सीबीआई की जांच के बाद सच सामने आएगा। निरंतर मुख्यमंत्री इस बात को कहते रहे कि उनके पिता चाहेंगे तो हम जरूर सिफारिश करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री से बातचीत में इसी बात को मैंने स्पष्ट तरीके से कहा कि देखिए, वो किसी एक परिवार के लड़के नहीं थे सुशांत सिंह राजपूत, सार्वजनिक जीवन में थे और उनकी लोकप्रियता देश भर में इतनी थी, सिर्फ बिहार में ही नहीं, देश भर में करोड़ों उनके प्रशंसक उनके रहे हैं। तमाम परिवार के लोग, तमाम उनके प्रशंसक चाहते थे कि सीबीआई की जांच हो। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री का बार बार सिर्फ ये कहना कि उनके पिता ही कहेंगे तभी जांच होगी, तो कहीं ना कहीं ये भी आज मैंने स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखा कि शायद ये उचित नहीं है। करोड़ों देशवासियों की भावना इससे जुड़ी हुई है, तो जितनी जल्दी हो सके आप इसकी सीबीआई जांच के आदेश दें। मुझे खुशी है कि आज माननीय मुख्यमंत्री ने अंतोगत्वा ये निर्णय लिया। सो जैसे आप देख रहे हैं, बिहार के बड़े बड़े लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स, कुछ तो ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे नाम हु रियली टू मच, जिसे कहते हैं ना, पॉलिटिसाइज किया, जिन्होंने इस पूरे केस को इनिशियली कुछ हमारे फेवर में भी थे, कुछ हमारी फेवर में भी रहे। मैं दैट्स व्हाट आई कैनॉट डिस्काउंट दैट कि हाँ, अगर कुछ ऐसी चीज़ें ना होती, पॉलिटिकल लीडर्स ना बोलते, तो शायद सीबीआई, शायद कुछ और चीज़ें ना हो पाती। तो ऑब्वियसली वी आर ग्रेटफुल, वी आर थैंकफुल टू देम, बट एट द सेम टाइम जिस तरह से आज की डेट में ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल एक 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 वो जो एक माइलेज जो लेने की कोशिश की गई थी, वो कहाँ है वो लोग? जूडी ऑल्सो सेड दैट, let me flash her comment one more time. Now, where are these people who call SSR बिहार का लाल? आपको अगर जो जो लोगों ने सेशन ज्वाइन किया, अगर आपने थंबनेल देखा हो, there were stickers made, there were masks made, बिहार पॉलिटिक्स, बिहार इलेक्शंस के अराउंड सुशांत के नाम के ऊपर स्टिकर्स लगा लगा के जगह जगह पर इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा था कि हम पावर में आएंगे और हम बिहार के इस लाल को जस्टिस दिलाएंगे। कहाँ गई वो पॉलिटिक्स, कहाँ गए वो पॉलिटिशियंस, कहाँ गए वो वादे जो सब लोगों के साथ हुए थे? वेयर हैव दे ऑल वैनिश्ड? ये जो लोग अभी भी बात करते हैं कि महाराष्ट्र में द गवर्नमेंट नीड्स टू चेंज, द पीपल नीड टू चेंज। मैं एक और अभी कमेंट एक देख रहा था ऊपर, आई थिंक केडी यू वर सेइंग आई हैव सीन 3 रूमर्स, वेट फॉर बीएमसी इलेक्शंस, वेट फॉर 2024 इलेक्शंस, wait for upcoming presidential elections, there will be presidential rule. Exactly, you put it very rightly. This is what it is. This is a slap on everybody's face, and this is a slap on each and every single person who's fighting for this justice. I don't shy away from saying that. ये मेरे मुंह पे एक तमाचा है, ये आपके मुंह पे एक तमाचा है. Everybody has used us. Everybody has used Sushant. Everybody has used this death, एक मर्डर जिसको डेथ और डेथ के बाद सुसाइड बार बार कैटेगराइज कर रहे हैं, टू गेन सम माइलेज, टू गेन सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल, कहते हैं ना, एक 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 फेवर, एंड उसके बाद सब इस बिहार के लाल को भूल गए। किसी ने मुड़कर उस स्टिकर के बारे में बात नहीं करी, किसी ने मुड़कर उसके उस मास्क के बारे में बात नहीं करी कि हमने इतना कुछ किया था, अब कहाँ गया? सब लोग पॉलिटिकल लीडर्स आके बात करने लग गए कि बिहार के टॉप कॉप को इन्होंने स्टैंप लगा के कमरे में बंद कर दिया, आइसोलेट कर दिया। क्या हो गया? हम पॉलिटिशियंस को ही सपोर्ट करते रह गए और ये पॉलिटिशियंस हमारे साथ ये सब कुछ करके रह गए।
फेवर वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे थे उस वक्त बिहार इलेक्शन था. Exactly, what's the Bihar Government ticket? He used to come on Republic too. Can't remember his name. No, Judy. So basically, not the. So there was. अभी मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, but there was this IPS officer, the police officer, जिसको बिहार से भेजा गया था मुंबई इस केस के लिए, और उसको क्वारंटीन कर दिया गया था 14 दिन के लिए. एक स्टैंप लगा दी गई थी. And this is what happened to everybody, but not a person like Rajdeep Sardesai, जो रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू के लिए फ्लाइट लेके आता है. डायरेक्टली उसको फ्लाइट से रिया चक्रवर्ती के साथ एक रूम में डाल दिया जाता है विद नो क्वारंटीन. किस लिए? किसकी पॉलिटिक्स थी ये? किस पॉलिटिकल रीजन से ये सब कुछ हुआ था? किसने ये करवाया था? एक और लास्ट मैं प्ले करूंगा और उसके बाद आई वुड लव ऑल ऑफ यू टू. ओके, आई थिंक दिस वाज इट. ऑलराइट, let me just play this. Vinay Tiwari, thank you for clarifying. September 30th. Let me just move it back a little bit. September 30th, 2020. 3 months. 3 महीने में this entire thing took a different level. Sushant के dad eventually met with the chief minister of Bihar. बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीजें हुई, जिस वजह से उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुए. Let's hear this video also. सुशांत सिंह केस की जांच मुंबई पुलिस बड़े प्रोफेशनली और बहुत ही अच्छी तरीके से कर रही थी, लेकिन एकाएक केंद्र शासन ने पूरी जांच, पूरा इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दिया. वो उनका अधिकार है. फिर भी जब जांच सीबीआई को दिया, उस टाइम भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने जो ऑर्डर पास किया था उसमें लिखा था कि मुंबई पुलिस सुशांत सिंह केस का बहुत ही अच्छी तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है. इस प्रकार का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी था. उसके बावजूद सीबीआई को इंक्वायरी दी गई. गए 1.5 महीने से सीबीआई इसकी इंक्वायरी कर रही थी, इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही थी. और इसमें खास करके आपको पता है कि एक प्रकार से जिस प्रकार की राजनीति यहाँ पे खेली गई, इसमें महाराष्ट्र को बदनाम करने का काम किया गया. इसमें मुंबई पुलिस को बदनाम करने का काम कुछ राजकीय लोगों ने किया, कुछ राजकीय पक्ष ने किया. ऐसा है कि सुशांत सिंह केस का फायदा आगे आने वाले बिहार चुनाव में होना चाहिए. उसके लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी ने इस प्रकार की साजिश, इस प्रकार का राजकारण किया. उसमें महाराष्ट्र पुलिस को बदनाम करने का काम, महाराष्ट्र को बदनाम करने का काम, एक जो जांच जो चल रही थी वो किसी व्यक्ति को उसको बचाने के लिए चल रही थी, इस प्रकार का भी आरोप किए गए. मतलब बहुत ही अच्छी तरीके की राजनीति एक नेशनल पार्टी ने यहाँ पे की, जिसकी सबको मालूमात है. Yes, this was Anil Deshmukh.
जो अपनी प्यारी मुंबई पुलिस, अपनी प्यारी महाराष्ट्र, अपनी प्यारी मुंबई को बैठे थे डिफेंड करने, जिनको शायद इसके लिए भी भेजा गया होगा टू कवर अप, टू पेस्ट a glorified image of मुंबई पुलिस, जिसके पुलिस ऑफिसर्स के थ्रू या लोगों के थ्रू रिकवरी होती थी, वसूली होती थी, पैसे होते थे। बैठे हैं ये जेल के पीछे इस टाइम, एंड he should rot there till the end. But end of the day, जिस तरह से इन सब पॉलिटिशियंस ने ऊपर से लेके नीचे तक, आप देखें चीफ मिनिस्टर से लेके, चाहे वो शरद पवार जैसे लोग हों, चाहे वो अनिल देशमुख जैसे लोग हों, चाहे ऑब्वियसली द ठाकरेज, एंड वाई टू फॉरगेट संजय रावत, जिसने भी काफी बकवास करी थी, बहुत सारी अपनी कवर अप करने के लिए चीजों को, जो खुद ही आज की डेट में ही इज ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग टेकन इनटू कस्टडी। ये सब लोगों ने मिलके किस तरह से इस सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस को पॉलिटिसाइज किया, वीक करने की कोशिश की गई इस केस को, एंड देन एट द सेम टाइम सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखा गया, अपना फायदा निकाला गया। लोग कहते हैं कि कुछ लोगों को तो इससे कोई फायदा होगा नहीं। समटाइम्स इट्स नॉट अबाउट द पॉलिटिकल माइलेज, इट्स नॉट अबाउट एक टिकट, इट्स ऑल्सो अबाउट बीइंग इन दैट लाइमलाइट। जैसे हमने नवाब मलिक जैसे लोगों को देखा, जिसको मुझे तो समझ ही नहीं आया कि उसको चाहिए क्या था इस चीज में, बट फिर भी उसने शायद अपनी एक लाइमलाइट में रहने के लिए, एक न्यूज में रहने के लिए अपने आप को किया, और आज की डेट में हम देख रहे हैं कि उसका हाल क्या है। ऐसे ही सब लोगों का सेम हाल, सेम सिचुएशन होनी चाहिए, एंड दैट्स व्हाट आई वुड लव टू सी। बट जिस तरह से इस पूरे मर्डर को पॉलिटिसाइज करके आज की डेट में, मुझे नहीं पता कि व्हाट इज द फ्यूचर। बहुत लोग चैट में, डीएम्स में, व्हाट्सएप पे आके बात करते हैं। कल भी किसी ने, एक्चुअली विदाउट नेमिंग नेम, let me read out to you a WhatsApp message of somebody. Uh, I'll just read out the entire message for you. My personal opinion on the SSR case: he was an actor extraordinaire, but he will never get justice. The mindset of the corrupt entities are too far moved. It's unfortunate. ये एक ऐसे वॉरियर हैं जो रिसेंटली मेरे साथ कनेक्ट हुए, एंड यही सिर्फ नहीं है, ऐसे बहुत सारे और लोग हैं, बहुत सारे वॉरियर्स हैं। आई डिडंट सी ममता जी है, ममता कोहली, शी मेंशन्स इट एज वेल कि ना तो एजेंसीज पे, ना पुलिस पे, ना डिफरेंट हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं उनके ऊपर कॉन्फिडेंस है। शी बिलीव्स इट इज ऑल अबाउट the spiritual power of Sushant that will get him justice. I believe, I also started believing in that. शुरुआत से मैं यही देख रहा था, शुरुआत में मुझे भी लगता था कि कुछ नहीं होने वाला। जिस तरह की हमारी पॉलिटिक्स, जिस तरह के हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जिस तरह के हमारे गवर्नमेंट, ऐसे ऐसे हमने चीजें सुनी हैं, चाहे वो कोर्ट्स हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो एजेंसीज हो, चाहे वो एडवोकेट्स। यहाँ तक भी मैंने सुना था कि एडवोकेट भी तुम हायर करते हो। इफ यू रिमेम्बर, राबिया खान, उन्होंने मेंशन किया था कि इवन द लॉयर, दैट द जो जो उनका खुद का लॉयर था, he also tried to act smart by working in tandem with the पंचोलीस और उनके लॉयर के साथ, to
gain mileage and shut off everything. जिया खान के केस में डेट्स को ना उनको पहुंचने देता था कोई और खुद नहीं पहुंचता था, and it really made a lot of impact to जिया Khan's case as well. सेम चीज यहाँ पर मैं अब इस सुशांत सिंह राजपूत, दिशा का तो चलो, द फैमिली इटसेल्फ इज मे बी अंडर प्रेशर, एंड जो भी उनके कॉजेज हैं या रीजंस हैं, बेस्ट नोन टू देम. बट सुशांत की फैमिली तो इस टाइम पे दे आर फाइटिंग हार्ड, दे आर रियली out and about, they are ready to literally rip apart people, rip apart the system. But ये सिस्टम इतना ज्यादा politically challenged है, charged up है, that there's very little that a common man can do about this. हम लोग ट्रोलर्स कहते हैं सिस्टर्स को टारगेट मत करो, टारगेट मत करो. Yep, even Judy, yeah, absolutely. I think even Shri mentioned it sometime, but no one can exactly, Ninara. That's the point. कि हम लोग इसी चीज के ऊपर एक बिलीफ रख के बैठे हुए हैं कि the justice will be served just because of God, because of the spiritual power. The सुशांत खुद ही अपनी जस्टिस के लिए फाइट कर रहा है. हम लोगों को तो एक तरह से we are just supporters. And all I can say right now is okay, sorry, I was distracted. I do believe, yeah, CBI मोदी जी न्यायालय पे भरोसा ना करें तो क्या करें. एग्जैक्टली आकाशवीर जी, यही प्रॉब्लम है कि हम करना चाहते हैं. केडी ने थोड़ी देर पहले जो एक कमेंट लिखा था, आई एग्री विद दैट. सब लोगों ने ये कहा था शुरुआत में, प्रेसिडेंट्स रूल, महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल, गवर्नमेंट चेंज होगी तो होगा. बिहार के अंदर इलेक्शन पूरे होंगे, उसके बाद दे विल टेक अप सुशांत केस एंड दे विल फाइट द महाराष्ट्र गवर्नमेंट. नथिंग हैज हैपेंड. 2 साल होने को आए, मई आ चुका है, जून 14 को 2 साल हो जाएंगे. कम से कम भी अगर मैं देखूं तो 21 मंथ्स, ऑलमोस्ट 22 मंथ्स, 21 मंथ्स हो चुके हैं सीबीआई को इस केस पे चुप्पी बनाए हुए. कोई अपडेट नहीं, कोई चीज नहीं हो रही. These things take time. We shouldn't lose heart. A corrupt system which has been around for a long time takes time to break. That's what Sri is happening. That's what everybody, including myself, we are all doing. We are keeping our faith. We are keeping our patience. We are continuing this fight. हम लोग बार बार ये डिफरेंट डिजिटल कैंपेन्स, ग्राउंड पे प्रोटेस्ट, हर चीज कर रहे हैं to keep this movement alive. But at the same time, these politicians, the people in power, they really need to get their act together. इन लोगों को करना पड़ेगा, इन लोगों को जोड़ना पड़ेगा, उनके साथ बैठ के इस फाइट को लड़ना पड़ेगा. और कुछ लोग जैसे ये राणे हैं या और भी कुछ लोग हैं जिनके पास एविडेंसेस हैं, दे शुड कम आउट एंड गिव दोज एविडेंसेस. चाहे वो एजेंसीज को दें, चाहे वो पब्लिक में डाल दें. एंड ऑफ द डे these things have to come out. Nobody has the moral or the कहते हैं ना, एक official rights भी नहीं होने चाहिए that if you have evidences, you should not be keeping those evidences to yourself. They should be out and about. They should be given to the agencies. Or agar agencies they take a U-turn, or if the agencies don't go in the right direction, agar hum un agencies ke upar bhi fingers uthaएं कि they are corrupt, then these things should be made public. एंड पब्लिक अपने आप इसका फैसला कर लेगा, जैसे आज की डेट में हो रहा है कि लोगों को हम लोग पहचान चुके हैं, हम लोग जानते हैं कौन क्या कितना इस केस में इन्वॉल्व है. इट्स मैटर ऑफ टाइम दैट वी कंटिन्यू टू बॉयकॉट देम. जैसे हमने बॉलीवुड को पूरा बॉयकॉट किया है, वैसे ही वी विल स्टार्ट बॉयकॉटिंग दोज पॉलिटिकल टीम्स, पार्टीज, लीडर्स, individuals जिसको करना है, and we have to continue doing that. Conviction
in the court is a different battle. Currently, we are fighting for 302. We need to have patience to face this slow process. Yep. Iska ideal example, KD and everybody, is Rabia Khan, who is constantly fighting. Almost 9+ years, she's still fighting. She posts all those pictures, Jiaki. She posts all those pictures about the festivities जो वो enjoy करती थी. She posts all those memories with Jia Khan, जहाँ पर uh, she was so much, like she enjoyed life. और उसके साथ जो हुआ, we've all seen. We all know who were involved. But at the same time, there is nothing that she can do right now. All she can do is keep the faith, keep more patience. जो अभी 9 साल हुए हैं वो हो सकते हैं कि और कुछ महीने साल हो जाए, but she's keeping the faith. I don't believe कि सुशांत के केस को इतना टाइम लगना चाहिए. The other difference I see in all of this is the kind of energy and the kind of grit that Priyanka Di, Me Too, and the entire Sushant family is keeping, and they will not stop. They will rip apart. मैं बड़ी बार बोला है क्योंकि मुझे ये feeling है कि they will not leave anybody in this case. They will rip apart everyone. चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो, चाहे वो कोई भी political leader हो, party हो, they won't care. They will take this case to a closure. They will get a closure to their brother's death or murder, and they will not stop till it is done. So I think हमें सिर्फ support करना है. It is us that are encouraging politicians. That's true. Yep, we are India की agency. से सवाल नहीं करूंगा. All right, so I'm gonna, before I end this session, I'm gonna give all of you a chance if you want to share anything. But मेरे लिए, I have tried my best to be the most neutral person. I am not for any political party. End of the day, मुझे कुछ मिलना भी नहीं है, ना मैं वोटिंग कर सकता हूँ, ना मैंने वोट देना है. But yes, मेरी country अगर सही डायरेक्शन में जा रही है, मेरे if my people are getting the support and love that they deserve, then yes, I will continue to support that particular individual, politician, party, whatever it is. But end of the day, Sushant case mein, I don't really care who gets me justice. I don't really care who belongs to which political party. I want someone who can get us that justice. And whosoever that is, आप चाहे XYZ party के हो, किसी के भी हो, I give a damn to that party. I really want you to help get us to that closure. Hello, Linara. How are you? It's the right topic you have taken, because now, to be honest, I've given up. My prayers are just to God, and He will in some way give us justice, and it's already been deserved, seeing that Bollywood is on its way out almost. I'm also affiliated to none of the political parties. I don't trust any one of them. They're all the same and alike. I've been following this case since day one, and it is sad that not even one charge sheet has been done. It's almost 2 years. It's a disgrace. It's a disgrace, I'm telling you. And only yesterday, I saw news, and they put pictures, and the 2 young girls, 18 and 22, were beaten up in UP. And the story is, I don't know the facts, is that apparently she hung herself, but they're saying that the cops had done it. And absolutely same story like Sushant, Jia, and everything. This is getting from bad to worse. So where do we get hopes of our Sushant getting a clear justice? The sisters are day and night putting out tweets. Nothing is helping. It's gone to the deaf ears. We've been begging. How many times have we done digital protests? Varun, tell me. Yeah. The trouble you take, whether it's you, Forgot, anybody take. The girls are going on the roads posting it. People from homes are doing it. That's why I don't do it. I've done the 1,001 petitions from the thing. I've even written a letter, got no response at all. It looks like I've been tracked now, to be honest.
because I've sent my passport for renewal, because I don't want to have a British passport being tied on with something else as well. So, and it's always come back within the week. They've sent it to India for verification, apparently. So it doesn't scare me one bit. If it goes, Wow. I've got my British High Commission, because I've got the permit residence to live independent over here anyways, and the government will be there for me. But exactly the same thing happened. These two minor young girls, 18 and 22, for the same, if a brother has committed a crime, why should the sisters be tortured and get inside the house and beat them up? This is unruly, absolutely unruly. This is not on. And it's the same thing, it's just carrying on and carrying on and carrying on. How long is this going to happen? And the government is just shush, absolutely nothing about it. And everybody's saying suicide, everything is a suicide. So that's what I just want to say, Varun. I think so. You got a family, you got kids. I know you come now and then. I'm giving up now, but my prayers to God is not given up. And I can see that I get results. I'm getting results via Bollywood, because they are the first track. Ministers are getting. And it's all the parties. Why just blame one party? Look what they in Mumbai they did. They did the same thing to Sushant. And what's happening in UP is the same thing. A young girl in a little young 5-year-old was raped and brutally this thing and burnt up and this thing. They're talking about this young girl yesterday being beaten up and this thing. They did exactly the same thing, postmortem, and saying it's suicide. They took over the body, cremated everything, and people are now wanting a proper justification about it. Why did you all cremate the body? And not all the news channels give it, which is absolutely literally sad. So there's something needs to be done. And that's it. It's getting to me now. Honestly, it's getting to me. Because working in such Now I system, working with people see. like that, and things, it Yeah, is. I think I missed this news yesterday. A 21-year-old girl from Uttar Pradesh died after being allegedly thrashed by police. Wow. Yeah, it is that, because what they said that the sister has given the verdict, because the sister was locked up in one room and beaten up. They took the other one and were beaten up, and then all of a sudden they're saying that she's hung herself. So they're saying if she's hung herself, it was in the vicinity when the police were over there. So they should be thinking, and not so far, nothing against the police. They're all trying to cover up around about the same thing. Sushant was brutally beaten up. You can see the body. The body tells the story. True. Everything. True. Look at Ria roaming free and everything. It's not only Bollywood, politics, everything. And it's both sides. You scratch my back, I scratch your back. This is what is happening. So thank you very much. Thank you, And Lenora. And that's it. all Thank I can you. say is that I know it can get frustrating. I know it is frustrating for all of us, not just you, not for me, everybody. But leaving this fight will definitely not be a good thing. I know losing hope is easy, but at the same time, I think we need to keep that fight on, not only for Sushant but also for these incidents that you just brought up, right? A girl being killed, kids being raped, little kids, and all that stuff. We have to continue to fight, because end of the day, these criminals are not gonna finish or vanish like this. Abhi aaj सुशांत के केस में है, दिशा के केस में है, कल को it could be somebody within our family, and It's every somebody day. might. So It's it's every day everyday one happening, Varun. Every day one happening. Unfortunately, every day one is happening and nothing is done. And the people are just sitting tight and just sitting back and thinking, just fighting for Sushant, and we are still waiting and waiting. Voting will make it 2 years. So why should we wait for 2 years? Not 6 months should be the least. Yep. There should 6 be. months to 4 weeks should be the least of a year. Damn it, my God, they won't even believe the Prime Minister was in trouble. He was sued. He has to pay. He's still in the dogs. They're still after him. A copper did the same thing with one of the girls and all, rape, murdered, and things like that. He didn't take long from Scotland Yard. He's within the month he was done, and he's now in the lockup. So why is India just aiding him? And they're saying they're giving the loose land. The leash has been given to the cops. Yeah. That's it. The leash has been given to the cop. Yeah, thank you. All right. Thank you, Lenora. Hey, Anshul. Please go ahead. Hi, Varun, can you hear me? Yes. Hi, sir. This is the first time I'm speaking to you, and I'm so glad that you're keeping this moment alive.
It's been 2 years and we all are so disappointed, and sometimes I get too hopeless. But when I see people like you and जो भी आपके प्लेटफॉर्म पे लोग बोल के जाते हैं, उनकी बात से इतनी उम्मीद मिलती है. I get so much of hope that okay, there are people who are still believing that one day things will get better. So first of all, thank you for that. Thank you. Thank you. Sir, uh, what I feel about Disha's case, a lot of people are saying different things. Some people say that her family is scared. Some people say that her family has been sold out to the criminals, which is something that I don't believe. So, what if her family doesn't even know what has happened to her? Because they were not even living with her, they were living apart from her. And being in the Bollywood business, she must be so busy all the time. She might be hardly getting any time to meet her family. Rohan knows everything, but what if they don't even know anything and they're just being deluded by the Mumbai police that okay, your daughter committed suicide, and they just believed it because they were so distraught they couldn't question it. So Yep. this is also something I believe that they might not be aware of it. Sure, Anshul. I think I've said this couple of times, and for people who are making these statements that they've been bought, the parents have been bought, or they are, they are not here for Disha. I completely disagree with that, because end of the day, they are the ones who lost their daughter, and it's not like, they've not just picked her up and raised her up. It's there are emotions attached as a parent. So for people who are using those kind of statements, I definitely don't agree, and I believe there is something more to it. Yes, jo abhi aapne bola, the thing that you said, it's quite possible that were not even aware, and they are so much engrossed with those emotions. And Rohan Rai jo bhi bolega, I think they want to kind of trust or put trust in him. And maybe he is the one who really needs to, because अगर आपने अगर वो इंटरव्यू देखा है न्यूज लॉन्ड्री का, I've Yes, seen sir. it a couple of times now. And looking at his eyes, looking at his body language, looking at how he um, said few things, they don't even make sense. वो जो जाली को साइड करके वहां पर खड़े होना और वहां से मैं जंप करना या नीचे चला जा, all that is bullshit. That's not even like, not a sane person will be saying all that. And then obviously 2 saal, almost after 2 years, when it's the Sushant movement is not dying out, आप आके इस तरह की बातें करके क्लियर कर रहे हैं एक तरह से कि हाँ, it was an accident and she committed suicide, it was definitely not, no party, no rape, nothing. So all that is definitely a made up story by him. But end of the day, सुशांत के केस और दिशा में जो डिफरेंस है, जो वी ऑल हैव टू काइंड ऑफ मेंटेन अ लिटिल डिग्निटी एज वेल. अब जो फैमिली बोल रही है, जैसे अगर सुशांत के केस में भी कल को, इफ फैमिली स्टार्ट सेइंग दैट व्हाट, वी डोंट वांट टू परस्यू इट एनी मोर. Now, at that point of time, we will definitely all believe कि हाँ, they are under pressure or they've been kind of asked to do certain things. But Exactly, exactly. वहाँ पर दिशा के केस में, they have been doing this since day one. So I think we should give them that due respect. If they don't want to pursue it, we continue what we want to do it, without maligning their daughter, without maligning them, Exactly. without bothering them. But end of the day, there is definitely a connection between the two murders. Yes, sir. This is what I exactly believe, that at no cost we can malign them. Even I feel that even the Ranis have are keeping quiet because their family has threatened them that if you take our daughter's name, we'll file an FIR against you. So now even they are keeping quiet. And the surprising thing is, sir, this guy Rohan, has finally arrived after 2 years. If he was so much concerned that why media is using his girlfriend's name, if he was so much concerned that media is making a mockery of her death, why didn't he come before? He could have Yeah. came anytime. I mean, maybe he was distraught. Maybe he was depressed. He could have come after 8 months, 10 months, 5 months. After 2 years, he's arriving and he's making these claims. We're not idiots. We can see Correct. at least something. Yeah. Yeah. No, absolutely. And I would correct you on one That's thing. the thing. What I know about it is, he, Disha and they were about to get married. He was, I mean, she was the fiance. Yes, yes. तो ये लोग शादी करने वाले थे, तो अगर आप ये लेके चलो, अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी लेके चलते हैं, चलो, कि they were in a kind of a temporary relationship.
but they were about to get married. So if something happens to somebody you were about to get married to, you will be very aggressive. You will be like एक वो thought process आ जाता है कि you know what, how dare that Exactly. someone did this to my girlfriend or my boyfriend or whatever. And वहां पर you try to bring all the facts out. So going by what has happened, ये जो 2 साल जो underground रहा छुप छुप के, there was no reason for him to hide. There was no reason for him to, not respond to his social media Yes, that's posts and all that stuff. एंड अगर आज इतना बॉदरेशन हो रहा है बॉस तेरे को कि भाई 2 साल के बाद तेरे को एक एक न्यूज लॉन्ड्री जा, गो सिट डाउन विद अर्नब और एनी सच प्लेटफॉर्म and answer those questions point blank, and then we'll see who's right and who's wrong. So definitely his coming out after 2 years is a lot fishy. And hopefully Sushant or Disha dono ki hi spiritual powers will get us kind of the justice that they want and the closure that we want and the parents want. But I'm sad to see Disha's parents being in whatever uh blind spot वो जिसमें है. So yes, sir. That's the thing. that's it. And the thing is, जी बोलिए sir, बोलिए. नहीं नहीं बोलो बोलो. So even if you see that drone had nothing to fear, the whole ships, the entire Mumbai government was in favor. Even Ranis were calling him out that okay, come here, we'll protect you. He didn't come out. Yeah. But the if he says that it was just a suicide, the entire government will support him and protect him. What he had to fear? Absolutely nothing. And if you see what news laundry has done, I've been observing this news channel for for a couple of years, and I know what they did. When it came to nepotism, they just called out Swara Bhaskar. They invited her for an interview, and she just really easily gave a clean sweep to Bollywood. Okay, and about the Sushant's case, what they did that they just talked about the politics, the BJP and Shiv Sena and all that. They didn't even talk about the one fact about this case. One fact. All they talked about was politics, and they call themselves journalists that we are doing the journalism. This is all bullshit. They have been the propagandists for years. I've been observing them. Right. No, absolutely. I agree. And I think that's what is evident based on what has been happening. And you brought up a very good point, कि अगर suicide ही था boss, तो तुम इतनी देर, why were you like bloody hiding? Why were you even scared? It That, was just a suicide. So you come out and say confidently, okay, and why yes, let people make a mockery of your fiance's death? exactly, यू कम exactly. आउट एंड टॉक अबाउट इट, और अब आके तुम बोल रहे हो कि हाँ मैं तो राणे से भी बात नहीं करी जो बट देन अगेन ऑन द अदर साइड नारायण राणे या दे शुड फाइल some kind of a thing against him, at least publicly aake they should come and speak कि ये झूठ बोल रहा है, and they should give, because they mentioned it कि हमारे पास तो उसकी रिकॉर्डिंग है, the conversation between रोहन राय and Exactly. राणे. दे शुड मेक दैट, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए. एटलीस्ट इट विल क्लैरिफाई that yes, what he's saying is a lie and what the Ranis are saying is a fact. So but we'll see, we'll have to wait. I think patience is still something which we'll have to keep. Yes, So that's the thing. The Rane family is claiming things. They are claiming things, but they're not doing anything on the ground. Neither they are going to the agencies, neither they yeah, are doing anything else. But they are giving press conferences, and they are making our hopes going high. But at the end, we yeah, are not getting any results from them. So we are being fooled somehow. I feel. correct. No, I think the hopefully something will come out and Rane's come out with some of the evidences, something that Yes. can be made public. उसी की wait है. And फिर we'll see. Exactly, Himal. That's another point which ये पिज्जा वाली जो बात हुई थी. People from Mumbai, I spoke to a couple of them. It was so bad at that point of time from a COVID perspective. सब कुछ lockdown था. Or pizza delivery, was something which was very hard. Even for a place where she stays, it was not that easy. तो ये कहना कि वो Yeah. पिज्जा डिलीवर हुआ था, it all sounds very very fishy. Oh, there So are so many fishy things. There are so many yeah, fishy things. Even in Sushant's case, they said that he went for a run. He went for jogging in the morning. If he went for the jogging, he lives in Carter Road.
It's a posh area. There might be so many CCTV cameras. Not even a Correct. single footage we have seen him running. Yeah. Not even a I know. single footage we have seen him running or doing anything. And this case is just botched up totally. Total botch up. God knows Exactly. what CBI is doing. Right. Right. All right. I'll take Ayush as well. Ayush, क्या कहना Yeah, चाहोगे thank आप? you so much. Thank you. Thank you for joining. Thanks, Anshul. नमस्ते Namaste. ये रोहन रॉय इसको 1.5 साल बाद ही नींद क्यों खुली? भाई तुम कैसे लवर हो? हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ इतना बुरा हो गया, तुम आज जाके इंटरव्यू दे रहे हो? आज रोहन रॉय है, कल पता नहीं रात में महेश शेट्टी को सपने आएंगे, वो भी आ जाएगा मीडिया के सामने। तो ये इस तरह, और इन पॉलिटिशियनों का क्या कहूँ मैं, ये अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब ये गोल गोल घुमाने की कोशिश करे कि मेरे पास ये है वो है। अरे आपके पास एविडेंस है तो आप जाके दीजिए ना, खामखा लोगों का टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल। इससे क्या होता है कि आप खाली आप डाइवर्ट होते रहे, इनकी बातों में आप उलझे रहे। बट ऐसा नहीं है, और इन ट्रोलर्स को तो मौका मिल गया आजकल का कि ये करना है वो करना है। Yeah. नहीं, ये तो ट्रोलर्स की तो चलो जितनी कम बात की जाए उतना अच्छा है, टॉपिक ही बदल जाता है। बट एंड ऑफ द डे ये जितने भी पॉलिटिशियंस, जितने भी अभी हमने जैसे एक इंटरव्यू ये वाला देखा, इंटरव्यू क्या, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अनिल देशमुख ने, वहां पर ही इज ओनली एंड ओनली ग्लोरीफाइंग मुंबई पुलिस। मुंबई पुलिस ने तो बहुत ही अच्छा काम किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे शाबाशी दी, शाबाशी। टोटल वेस्ट काम किया, टोटल बॉचअप किया, जिस तरह से एविडेंसेस को लिफाफों में उठा के, प्लास्टिक के पॉलिथीन बैग्स में। आई मीन ऐसा कौन करता है? मैं कहता हूँ एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, छोटा सा छोटा गांव भी होगा ना, वहां पर भी अगर ऐसा कुछ होगा, शायद वो प्लास्टिक के इस तरह के पॉलिथीन लिफाफों में एविडेंसेस नहीं लेके जाएंगे। वो लोग भी डरेंगे कि यार हम ये ऐसा कर रहे हैं, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये मुंबई जैसी जगह पे, बॉम्बे में बैठ के तुम एक एक मूवी स्टार की, सपोजिटली उस टाइम पे, अगर हम आपकी इन्हीं की बात मान लेते हैं कि किसी ने सुसाइड किया है, उसको सुसाइड प्रूफ करने के लिए तुम अगर एविडेंसेस इकट्ठे कर भी रहे हो, दिस इज नॉट हाउ एविडेंसेस आर कलेक्टेड। अपने आप को स्कॉटलैंड यार्ड बोलते हो, ये स्कॉटलैंड यार्ड क्या, ये तो किसी जंगली यार्ड में बैठ के भी कोई ना ऐसा काम करे जो तुमने किया। शेम ऑन देम। एंड ऑल बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल बिग विग्स जिन्होंने इनको बोला होगा किस तरह से इसको कवर अप करना है। और वही है, पुलिस का एक रुबाब होता है, एक वो पोजीशन होती है, दे कैन डू एनीथिंग। कल को भगवान ना करे ये केस उस के जब कोर्ट में जाएगा और वहां पर वो बोले कि हाँ हमसे गलती हो गई, दिस इज अ मर्डर केस। आई थिंक एनीबडी हु सेज कि हमसे गलती हुई या हमने ये गलत किया, हमने इस तरह से एविडेंसेस किए, they should not just be penalized, they should be given the maximum sentence possible, ताकि वो एक एग्जाम्पल सेट हो। पर यहाँ जिस तरह से इन लोगों ने अभी भी कर रहे हैं अपने आप को दिखाने के लिए कि हाँ दे आर, और बहुत सारी ऐसी चीजें करी उसके बाद इन्होंने अपनी इमेज करेक्शन के लिए, कमिश्नर नया जो आया उसके थ्रू करने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली नथिंग कैन बी डन राइट नाउ। एंड द ओनली थिंग इज, चाहे ये कितने भी बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हों, चीफ मिनिस्टर के बेटे हों, एंड वट एवर एफिलिएशन दे हैव टू वट एवर पार्टी, आई थिंक end of the day, Sushant या दिशा, इनकी spiritual powers will act, will take their own revenge, and they will definitely get a closure. Family के लिए हम लोग सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि we show them the respect, we show them the regard, uh, चाहे वो दिशा की फैमिली ही क्यों ना हो, and we should not be talking ill about the parents. At the same time, जैसे सुशांत की फैमिली कर रही है, आई थिंक आई वुड इनकरेज ऑल ऑफ यू टू कंटिन्यू टू सपोर्ट देम। एंड जैसे जैसे वो रोज एक नई टैगलाइन दे रहे हैं, उसको समझें, उसके हिसाब से यू बिकम मोर अग्रेसिव, यू बिकम मोर असर्टिव, एंड ब्रिंग सर्टन फैक्ट्स आउट एंड कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट, क्योंकि बात करते रहना वो ज्यादा जरूरी है। सिर्फ एग्रेशन दिखाना ही इस केस को नहीं सॉल्व करेगा, हमें सिर्फ कंटिन्यूसली बात भी करनी है। सबसे हेलो। गंदी आदत क्या है लोगों की कि उनके दिए हुए टैगलाइंस पे भी सवाल उठ रहे हैं, अब वो टैगलाइन भी ना दे। हाँ, बेवकूफ लोग हैं वो, जो जो सवाल उठा रहे हैं। नमस्ते सुनंदा जी, वेलकम एंड होप यू आर डूइंग वेल। हेलो हेलो वरुण।
हाँ जी, नमस्ते। हाँ, नमस्कार। अच्छा, मैं बहुत दिन से सुन नहीं पा रही हूँ, ना आ पा रही हूँ, लेकिन बीच-बीच में सुन लेती हूँ, सॉरी। नो बेटा वरीज़, का नो शादी वरीज़। है ना, नो सन्स मैरिज मैं इज़ भी देयर थोड़ा ऑन स्लो हूँ 25th। आजकल, इतने उतना कॉन्स्टेंटली नहीं, व्हेन आई फील हाँ, लाइक वो तो मैं सर्च टॉकिंग करते अबाउट रहती इट। हूँ रोज़, हाँ वरुण जी, आता है क्या? लेकिन हाँ बट जी। माय सन्स मैरिज इज़ देयर ऑन 25th, गॉट सो इट, आई गॉट एम इट। लिटिल बिज़ी, वेरी बिज़ी। श्योर, श्योर, तो श्योर। लेकिन फिर भी अभी आज मैंने सुना, तो मैं सोची कि थोड़ी देर के लिए आ जाऊँ और सभी को ईद मुबारक, जितने भी लोग हैं हमारे एसएसआरियंस। ईद एंड मुबारक। आज 3 अपने हिंदू ये है, एक तो परशुराम जयंती है, अक्षय तृतीया है एंड बसव जयंती है। गॉट ये इट, गॉट इट। तीनों का शुभकामनाएँ सभी को। थैंक यू सो मच। हाँ, आज आपको भी। तीनों Thank हैं, you. ऑल ऑस्पिशियस ये है डे है आज फॉर एवरीवन, ऑल रिलीजन के लिए। अच्छा, फिर मैं ये बोलना चाहती थी, जो रोहन राय का इंटरव्यू मैंने भी कल देखा कि सडनली मैं गई तो मुझे वो कोई अपना सचिन का चैनल, शायद उसमें कुछ किसी का चैनल पे दिखाई पड़ा, तो मैं सुन रही थी। ओके, वही जो दिया था रोहन राय ने अभी लेटेस्ट। राइट। अच्छा, आपको क्या नहीं लगता, क्योंकि वो रोहन राय का जो बॉडी लैंग्वेज था, उसमें क्या दिख रहा था आपको? कुछ तो ऐसा उसको फीलिंग था क्या कुछ भी? हाँ, हुँ? मैंने फर्स्ट टाइम जब देखा था 15 मिनट का जो एक स्नैपशॉट, पहले मैं थोड़ा-सा उसको समझने की कोशिश कर रहा था, पर उसके बाद मैंने 4 से 5 बार और देखा। मैंने भी और उतना अगर ही आप देखा है, उसको थोड़े 15 मिनट का। हाँ, अगर आप उसको देखें दोबारा से, बार-बार देखें और ध्यान से देखें, उसका जो एक कैजुअल एटीट्यूड, जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से वो नहीं बैठा है। वरुण, ये सब फिक्स किया हुआ गया है, कुछ नहीं एग्ज़ैक्टली, है, दिस इज़ ऑल टॉट। क्योंकि देखिए, आप जब बीच में एक बार ये हुआ था कि वो मेयर जाके वो दिशा की माँ और पिताजी से बात की थी, याद है ना बिल्कुल, आपको? या They blamed the media people and all, why media is spoiling our daughter's name and all। याद है या आपके? बीच में हुआ था थोड़े दिन पहले। करेक्ट, करेक्ट, हाँ, तो उसमें भी यही हुआ था कि अगर देखिए, अगर पेरेंट्स को कुछ दुःख हो रहा है अपने बेटी के बारे में अनप-शनप बोल रहे लोग, तो पेरेंट्स आके इंटरव्यू दें ना, मेयर को जाने की क्या ज़रूरत है वहाँ? बिल्कुल, बिल्कुल। तो दैट वाज़ आल्सो फिक्स्ड, ये भी अभी फिक्स्ड है। अभी या इसको शायद दबाव आया है कि तुम जाके बोल दो बाबा, अभी चुप बैठने दो सभी लोग। बिल्कुल। ऐसा आई कुछ नो, चल पूरी रहा है। स्क्रिप्ट दी गई होगी, बहुत सारी हाँ, चीज़ें, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि इतना ही अगर इसमें कॉन्फिडेंस है और इतना ही इसको है, तो ये पहले क्यों नहीं आया था? हाँ, और अगर अगर अभी भी आया सुसाइड था होने तो से हाँ, नहीं, जाओ वरुण, अगर रिपब्लिक के सुसाइड पास ही होगा। बैठो, अर्नब के पास बैठो, और भी 2-3 हाँ, ऐसे लोग हैं, ठीक उनके है। साथ बैठो और सेशन करो और उनके क्वेश्चन्स को लाइव आंसर करो। हाँ, दिस हाँ, इज़ द वही ओनली तो। डिफरेंस, कि लाइव कुछ और करना नहीं। सुसाइड होने से इससे डरने की क्या बात है? अगर सुसाइड है, एग्ज़ैक्टली, सच में सुसाइड है, तो वो तो करेक्ट, पूरा 1 साल तो पूरा हमारे सामने होना चाहिए था उसको, 2 साल पब्लिक के करेक्ट, सामने। हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी फियांसी को जस्टिस मिले। बिल्कुल। ये तो कहीं भी नहीं कहा उसने। और वो जो दूसरा फ्रेंड जो बैठा था, जिसका एक एक जिसने कहा कि वो मैं तो अवरेज था। वो, हाँ, हाँ। उसको भी देखा मैंने, उसका तो बॉडी टाइम्स लैंग्वेज नाउ अलग ही पे था। जाके मैंने इंटरव्यू दिया था, अभी तो मैं वेट कर रहा हूँ कि टाइम्स नाउ भी कुछ उस उसके बेसिस पे आके बात तो करे। तो सबसे हैरानी की बात तो मुझे यही लगती है कि टाइम्स नाउ और रिपब्लिक दोनों ने ही अभी तक इस इंटरव्यू के बेसिस पे कुछ फैक्ट्स बाहर क्यों नहीं रखे? नहीं, दैट इज़ व्हाट ये आई जो अभी क्या बताया आपको, बताओ, ये सब बिक चुके हैं। ये सब मीडिया, मुझे तो ऐसा लगता है, आई फील, इट इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, आई फील या कि सबके सब बिक चुके हैं। सब ठीक है, अभी क्या है, आपने जैसा अभी पहले से बता रहे हो आधा घंटे से, कि वो डिवाइन जस्टिस ओनली, वी हैव टू बिलीव इन। ये पॉलिटिशियन के बारे में भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि डोंट बिलीव इन पॉलिटिशियंस। या नहीं, सब अपने एब्सोल्युटली अपने काम धंधे के लिए कर रहे हैं, सभी लोग। सब महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस, अभी आपको पता है वो गुप्तेश्वर पांडे जो बिहार का था, अभी जो जोड़ी लिख रही थी, तो सब लोग उसके नाम ले रहे थे। बिहार राइट, के जो डीजीपी थे, या इतने बड़ा-बड़ा बात कर रहे थे वो रिपब्लिक में आके, मैं तो एकदम उनके फैन हो गई थी। अरे बाप रे! या कितने अच्छे पुलिस ऑफिसर है हमारे, कितने ये इंटरेस्ट ले रहे हैं। बाद में क्या हुआ? रिज़ाइन या किया, पॉलिटिकल पार्टी जॉइन किया, उसके बाद उसका नामो-निशान नहीं है। कहाँ गए वो? छुप गए। हाँ, ये सब क्या चल रहा है इन लोगों का? नाटक क्यों कर रहे हैं इन लोग? करेक्ट, हाँ? करेक्ट, वो या बेचारा बच्चा, उसका जान गया, उसको बार्बरिक तरीके से इन लोगों ने मार डाला। एटलीस्ट थोड़ा तो ह्यूमैनिटी रखो ना। नहीं है। या हम खाली दुःख उड़ा रहे हैं, लेकिन हम खाली फ़ील कर रहे हैं। अभी तो देखिए 14 जून आएगा तो कितना हम लोगों को दुःख होगा, सबके सब। एवरी डे ऐसा नहीं है वरुण, एक दिन भी बीता नहीं कि वो लड़का के बारे में हम सोचे ना, उसका फ़ोटो देखे। या हुँ? सही बात है। मेरे जैसे कितने लोग, आप जैसे कितने लोग हैं, कितने लोग हैं। ये बच्चियाँ तो कभी-कभी कितने बोलते हैं, मैं वो डिजिटल इसमें देखती हूँ, क्या-क्या लिखते हैं उन लोग।
ये सब होने के बावजूद भी अगर ये पॉलिटिशियंस को कुछ असर नहीं पड़ रहा है, अभी भी खेल खेल रहे हैं। ये नराने बता रहे हैं कि हमारे पास वो एविडेंस है, ये भी एविडेंस है, तो दे दो ना सीबीआई को, बता दो, अभी आउट करो। पब्लिक Yeah, थक गए, आउट करो अभी। पता yeah. नहीं अब क्या होगा। मुझे तो सच्ची, मैं तो पूरा भगवान के ऊपर छोड़ दूं, डिवाइन जस्टिस के लिए हम वेट कर रहे हैं, बस उतना ही। I know. सारे किसी के सारे आई ऊपर थिंक भरोसा, सबका वही आ गया है, the किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहा अभी, हाँ किसी के ऊपर। and अभी देखिए, अगर वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को गिराना है उनको, ये तो मैं पहले आपको बोली थी एक बार तो, कि प्रेसिडेंट रूल लाना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है, होप्स था। लेकिन ये भी तो इन लोग ठीक तरह से प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? yeah, वो भी तो कुछ नहीं हो पा रहा है ना। गिराने का तो बहुत टफ है, वो इजी नहीं है वहां। yeah. नहीं, देखते वो हैं भी तो क्या होता है। एग्जैक्टली नहीं, अभी आपने और जूडी ने जो एक नाम लिया, मैं एक चीज यहाँ दिखाना चाहता हूँ सबको कि ये हैं वो टॉप कॉप हाँ, जो अब सेंट मैं तो बन गए हैं। मैं तो उनका पीछे फिदा हो गई थी, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था, बाप रे कितने, कभी मैंने जिंदगी में देखा नहीं इतना अच्छा टॉप अप करके, मैं सोच रही थी। यप। और आप ये आज की डेट में ये जो बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर हाँ, पांडे, ये अब कितना, अपने आप को सेंट बना चुके हैं। अरे और बाप रे, ये सुपर कॉप टू सेंट, ये इनकी अब लाइफ है। और ये मैं एक लाइन पढ़ रहा था, क्यों ये पॉलिटिक्स में नहीं गए क्या वरुण? ये मुझे कह रहे लगता हैं आई पॉलिट डोंट हैव एनी डिजायर लेफ्ट, आई हैव डेडिकेटेड माई सेल्फ टू गॉड, आई विल डू वट ओ, एवर ही सेज। नहीं, मुझे क्या लगता है वरुण पता है, एक इसके पीछे कुछ सीक्रेट छुपा है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आफ्टर सीइंग दिस सेंटेंस एंड ऑल, ही या दिस फेलो ही वांटेड समथिंग टू बी डन फॉर सुशांत। तो या इसने अपना बिफोर रिटायरमेंट ही ये वीआरएस लिया था, करेक्ट इससे, एंड ही वांटेड टू कम टू पॉलिटिक्स। तो या शायद उनको पता लगा होगा अभी पॉलिटिक्स में भी जाने से कुछ मैं नहीं कर पाऊंगा वहां, बिकॉज व्हाट प्रॉमिस ही डिड टू द पब्लिक, सुशांत फैंस, वो राइट उसको पता लगा होगा कि आई एम नॉट एबल टू डू इट, बिकॉज देखिए एक बार वो छोड़ के बाहर आ गए, तब उसको पता लगा होगा कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डू, क्योंकि इतना गंदगी में जाके वो कर नहीं सकेगा अगर सिंसियर भी होगा तो। या हम्म? शायद इसके लिए उसका मन में ये हुआ होगा कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ कुछ भी, ये भी हो या सकता है ना वरुण। या ये कुछ मेरा भी हो और एक सकता है। थिंकिंग है, इट्स माय यप अनदर थिंकिंग, बिकॉज आई नॉट सीन दिस पोस्ट, फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दिस व्हेन यू आर शोइंग इट, कि या उन्होंने ऐसा लिखा है। तो मे बी देर इज सम सीक्रेट बिहाइंड इट, कि मस्ट या हैव लॉस्ट होप, कि कुछ हो नहीं सकता है, मैं इतना प्रॉमिस किया लोगों को, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, एंड पॉलिटिक्स भी तो कुछ डर्टी गेम्स खेल रहे हैं। ही मस्ट हैव फेल्ट इट, वी डोंट नो एग्जैक्टली, है ना। ये मैंने देखा नहीं था, ये कभी का है? ये अभी का है, ये 2021 में जुलाई 1 लास्ट ईयर का है। और हम्म, इनको नीतीश जेडीयू ने टिकट नहीं दी थी, ही वाज नॉट गिवन अ हम्म, पॉलिटिकल। तो उसके बाद इन्होंने सोचा कि वो टिकट तो मिलेगी नहीं, तो हम्म, बाबा जी बन जाते हैं और बराबर। लोगों को और बेवकूफ बनाते हैं, या आई डोंट नो, आई मीन या आई पता आल्सो नहीं, हैड अ लॉट वही ऑफ तो, रिस्पेक्ट। अभी इनका ना फेस, दो फेस है। एक तो सच में इन लोग सिंसियर है कि ना सिंसियर है, हम कुछ समझ नहीं पा रहे, हम या फूल हो रहे हैं बस इसमें, बेवकूफ तो हम बन रहे हैं सबके सब। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, अगर ये सब चीज हमें कभी पता लगा, सुशांत के डेथ के बाद ही, कितने बेवकूफ बनाते हैं इन लोग पब्लिक को। दैट इज इतना ट्रू। हम लोग तो इन्वॉल्व कभी नहीं हुए थे, ना पॉलिटिक्स में ना इसमें, कि आजकल हम लोग को सबका फेस सामने आ रहा है। एग्जैक्टली। एनीवेज, हाँ, वो दूसरा फेस फेस हम लोग को दिखाई पड़ रहा है, कि ये दो दो फेस है इनका, आगे एक पीछे एक। या ये ये तो वरुण, मैं भी बहुत बिजी हूँ, सॉरी, मेरे से नो रह वरीज रह नो गए वरीज, तो। थैंक यू, आज आपने ज्वाइन किया एंड ऑब्वियसली नहीं, शेयर और किया अपने आपको व्यूज। आशीर्वाद, पूरा आशीर्वाद मेरा, और थैंक यू सो मच। मुझसे रहने गए तो मैंने सोचा कि थोड़ा तो मैं बोल दूं वरुण के चैनल पे नो जाके, कि थैंक मैं यू भी वेरी मच। ये दिला दूं कि मैं ही हूँ, मैं छोड़ी नहीं हूँ, मैं हूँ आप लोग के साथ। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही यही मैं सबको सजेस्ट करता हूँ हाँ, कि मैं भी इट्स वही नॉट बोलती हूँ, अबाउट, कोई छोड़े ना, कोई छोड़े हाँ ना, कोई भी सबके छोड़ लोग के रहे। ना जाए, थोड़ा पेशेंस नहीं, रखो, एक्टिव ना हाँ, रहो, दैट्स ओके, बट वो ये बीच बीच में लियोनोरा से भी मेरी रिक्वेस्ट है, अभी लियोनोरा बोल रही थी आई एम डन हाँ विद दिस करके, नहीं आप मत छोड़ो, आप होप्स मत को, डिवाइन जस्टिस होगा, वी विल बिल्कुल वेट फॉर बिल्कुल। दैट, हमारे सबके प्रेयर्स के वजह से तो होना ही है, या प्लीज डोंट लीव इट, वी सब हैव टू सपोर्ट ईच वन, दैट each इज other, ओके। exactly. ओके, चलो All right, वरुण, थैंक thank यू you so एंड much, बाय बाय, take care, गुड honey. नाइट, Take गुड care, good नाइट। night. All right guys, so on that note I am also going to end this session, जैसे कि आपने देखा
मिस्टर सुपर कॉप टू सेंट, ये तो हमारे हाल है, चाहे आप पॉलिटिकल देखें, चाहे आप पुलिस एजेंसीज या कोई भी एजेंसी देखें, उनके उनके लोग देखें, किस तरह से सब ने यू टर्न मारे, किस तरह से इस चीज़ को पॉलिटिसाइज किया, किस तरह से पर्सनल गेन्स में गेन लेने और माइलेज लेने की कोशिश की गई। कुछ को मिली, कुछ को नहीं मिली, बट सब अपने अपने लेवल पे इसको यूज़ करते गए। कुछ ने अपनी रोटियां सेक ली, कुछ ने अपने पर्सनल एजेंडास फुलफिल किए। End of the day, this entire movement was too much politicized by all these people. Uh, and I agree with Sunanda ji, Judy, Mamta, Kohli, everybody who believes that Sushant or Disha ki spiritual powers will help bring a closure to this case. Otherwise, ye agencies, I don't know. I have lost hope. I have lost agencies kahun ya political parties kahun ya political leaders kahun. Again, I have been very upfront about this. I am not pro any government. I am not pro any leader. I am not pro any political party. End of the day, जो हमें justice दिलाएगी सुशांत के लिए, that is the party, that is the leader, and that is who I will support. So सुशांत के लिए जो खड़ा है, उसके साथ हम भी खड़े हैं. That note, thank you so much. Take care. जय हिंद, जय भारत, and keep roaring for Sushant. And जाते जाते मैं एक बार फिर कहूँगा, the digital protest that happened was amazing. आपने देखे होंगे बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे क्लिप्स, बहुत सारे pictures. It is very heartwarming to see, even after 22 months, it is going strong. So guys, please keep on supporting all the protests, ground, yeah, digital, and please stand by always for the family, with the family. Thank you so much. शौक दिया है पॉलिटिकल लीडर से. Thank you so much. Take care. Good night, everyone.